I am starting with the series where I'll be posting my own notes from the Hindu newspaper which I make daily because I have got many queries कि समझ नहीं आ रहा notes बनाए तो किसके बनाए कैसे बनाए इतना सारा content है. So you just have to read these notes. I will be posting the PDF on the Telegram channel. The link will be given down. Okay. So if you want me to continue it, subscribe to my channel so that I get a hint that you want me to keep writing, making the notes, which will be beneficial for you as well as me. Firstly, we're going to study the editorial part and then we're going to move to the news part. The first news on the editorial is testing times. August foreign trade numbers are worrisome yet hold some hope. So this was the editorial. And what crisp we could find from the editorial was we have $24.2 billion trade deficit and it is the widest since October 2022. Though export volumes of 13 major items rose, 13 मेजर आइटम्स के जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है बिटवीन अप्रैल एंड जुलाई बट दे वैल्यू हैड डिक्लाइन. उनका वैल्यू में डिक्लाइन हुआ है बट उनका एक्सपोर्ट बढ़ा है. दैट मीन्स रुपीज़ में डिक्लाइन हुआ है बट उनका एक्सपोर्ट बढ़ा है. इंजीनियरिंग गुड्स always account for quarter of India's exports. Engineering goods are the goods which entail a huge amount in India's exports. And the summary of this editorial is India needs to do all it can do to nurture green shoots. Now, what are green shoots? Green shoots are the signs of economic recovery after a period of recession. So, what India needs to do is India needs to nurture its green shoots and support the exporters. So, this was the news on the editorial page. This is one of the very important editorials which has come in today's newspaper about the parliamentary conduct. It is written by Shashi Tharoor, who is a Lok Sabha MP and also Sahitya Akademi Award winning author of 25 books. Let's see what he wrote in this editorial. He wrote about the space for opposition. There are two British parliamentary procedures that were never adopted by India. Okay, so there were two parliamentary procedures which India never adopted, and these procedures were related to the opposition. If brought into practice, could remove any disruption. Now, what are those two parliamentary procedures? The first is the opposition day, and the second one is the prime minister's question time. Let's see what is the opposition day. A day or a week is allowed to the opposition to select specific policy areas. So, opposition can take one day or can take 1 week to select the specific policy areas or issues they want to bring to the floor of the house for debate. The number of opposition days, okay, the number of opposition days is determined by the government and opposition parties through an agreement. तो ये कौन डिसाइड करेगा कि opposition day कितने होंगे? एक डे दिया जाएगा या एक वीक दिया जाएगा टू द ऑपोजिशन सो दैट वो अपना डिबेट का टॉपिक लेके आ सके is decided by both the opposition and the government in a consensus in an agreement. Now, it allows debates on matters of political significance that the government could rather sweep under the carpet. So, वो ऐसा कुछ टॉपिक लेके आते हैं ऑपोजिशन डे पे जो गवर्नमेंट जनरली इन द जनरल डेज में डिस्कशन करने से बचती है. सो दिस इज अबाउट द ऑपोजिशन डे विच इज़ something which the British parliamentary has but which Indian parliament doesn't have. Now the next thing is Prime Minister's question hour. Now it is a widely watched parliamentary event in UK. Now where MPs have the opportunity to question the PM. So it is watched widely on the television in UK where all the MPs have the opportunity to question the PM about various issues. Now in UK it takes place every Wednesday and it lasts for about 30 minutes. So this is the crisp of this editorial, crafting a new chapter in parliamentary conduct. Now this is also one of the editorials which has come in today's newspaper. The heading is India is at a pivotal moment in its healthcare journey. It is written by the founder and chairman of Apollo. Now let's see what is there in the editorial. India is now the world's diabetes capital, as it is mentioned in the editorial. The youth are succumbing to heart attacks, cancer, hypertension, respiratory issues, depression, and a lot more. If left unchecked, India's non-communicable diseases burden will be nearly $4 trillion by 2030. It will create an age tax on India's demographic dividend. Now, what is the remedy of all this? Better lifestyle, as we all know, but we are not able to carry it. Comprehensive health checkups. Now, health checkups doesn't include just blood tests. Health checkup means your body checkup. Now, infant mortality rate has improved by 4 times, the maternal mortality by 7 times, and life expectancy is up to over 70 now. Infant mortality क्या होता है? It is the infant mortality rate. Okay, it is talking about the infant mortality rate. It is the number of deaths of children under 1 year of age per 1,000 live births.
पर 1000 लाइव बर्थ्स में, जितने भी 1000 लाइव बर्थ्स हुए हैं उसमें से कितने बच्चे मरे हैं 1 साल से कम के. नाउ our infant mortality rate is 27.01 as per UNICEF. What is maternal mortality rate? It is the number of maternal deaths for every 1 lakh live births. So इन्फेंट मोर्टिलिटी 1000 लाइव बर्थ्स पे गिना जाता है. जो मेटर्नल मोर्टिलिटी रेट है वो 1 लाख लाइव बर्थ्स पे गिना जाता है. हमारा मेटर्नल मोर्टिलिटी रेट है 103, जबकि हमारा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है 27. इंडिया हैज़ बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल वैल्यू ट्रैवल बिकॉज ऑफ इंडियाज एक्सपर्टीज इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कार्डियोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी. तो हम क्या बन गए हैं? लार्जेस्ट मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, बिकॉज हमारे पास एक्सपर्टीज़ है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी, कार्डियोलॉजी में भी, ऑन्कोलॉजी में भी और बहुत सारी जगह. इंडिया इज़ बिकमिंग MVP नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस बट बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ एक्सेस एंड शेयर क्वालिटी ऑफ केयर. हम स्पीडली मेडिकल एक्सेसिबिलिटी है वो कराते हैं और क्वालिटी हमारी मेडिकल की बहुत अच्छी है. रोबोटिक सर्जरी इज ऑल्सो गेन अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी नाउअडेज इन इंडिया. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरमेंट फॉर MVT. What is MVT? MVT is medical value travel. So public private partnership can also create a conducive environment for MVT. And don't forget, artificial intelligence is also rapidly transforming healthcare worldwide. It can predict diseases outbreak. Okay, so now this is what is given in this editorial. This news is given in today's newspaper about Project Cheetah, which has completed 1 year. Let's see what was there in the news. First batch of 8 cheetahs from Namibia arrived on September 17, 2022, that is last year. This was the question in SSC ka paper of 19th July, first shift. Okay. It was the question in SSC ka paper, first shift, about how many cheetahs we got from Namibia. Okay. सो फर्स्ट बैच हमारा 8 चीतास का आया था नामीबिया से सितंबर 17, 2022 को, लास्ट ईयर में, ऑफिशियली लॉन्चिंग द प्रोजेक्ट चीता. और तभी हमने प्रोजेक्ट चीता को ऑफिशियली लॉन्च किया था. इंडिया चीता इंट्रोडक्शन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था. सो फार अभी तक हमारे पास 20 एडल्ट चीताज इम्पोर्ट हो चुके हैं. उसके बाद अनदर बैच आया था 12 चीताज का, जो February 8, 2023 को आया था फ्रॉम साउथ अफ्रीका. अभी तक की न्यूज़ के हिसाब से 6 out of 12 चीताज विच वी गॉट फ्रॉम साउथ अफ्रीका हैव डाइड एंड द रीजंस उनके पास नहीं है, तो ये न्यूज़ में दे रखा है. This is also a very important news seen in today's newspaper about the OTT services. Why is the government pushing for regulatory mechanisms for OTT services? Let's see what is there in the news. The selective banning of OTT services came after a parliamentary standing committee issued a notice to the Department of Telecom. So now our parliamentary standing committee has issued a notice to Department of Telecom about the selective banning of OTT services. OTT services क्या है? Only OTT communication services like WhatsApp, Signal, Google Meet, Zoom, etc. were discussed. तो जो communication services हैं OTT की, वो ये सब हैं. कंटेंट OTTs के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है. पॉइंट टू बी नोटेड. कंटेंट OTTs आपके नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम एक्सेट्रा है, इनके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है. जबकि OTT कम्युनिकेशन सर्विसेज जो हैं लाइक व्हाट्सएप, सिग्नल, गूगल मीट, जूम एक्सेट्रा, इनके बारे में डिस्कशन हुआ है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज एज सून एज वी टॉक अबाउट OTT यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम एक्सेट्रा. नो, दीज आर OTT कंटेंट OTTs. These are not communication services. Okay. Now, content regulation is altogether a different subject. So, if you want to talk about regulation of content of OTTs, then it is a different subject and comes under the ambit of MIB, that is Ministry of Information and Broadcasting, and not TRAI. Telecom service providers like Airtel, Vodafone are of the opinion that OTTs should be regulated and charged as they thrive on the infrastructure built by operators. ये जो operators हैं एयरटेल वगैरह, वोडाफोन, ये बोल रहे हैं कि जो OTTs हैं उनको इक्वली चार्ज करना चाहिए जितना ये एयरटेल वोडाफोन को चार्ज किया जाता है. बिकॉज ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो एयरटेल और वोडाफोन जैसे ऑपरेटर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जबकि जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं वो ना तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के स्प्रेड में, ना वो मेंटेनिंग ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ पैसे लगा रहे हैं. ओके, तो वो दोनों तरफ से फ़ायदा तो कमा रहे हैं, बट ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ पैसे लगा रहे हैं, ना कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करा रहे हैं, ना एक्सचेकर के मनी में इंक्रीज़ हो रहा है. आगे बात करते हैं डिमांड क्या है इनकी. तो ये बोला गया है कि जो प्रोवाइडर्स हैं लाइक एयरटेल, वोडाफोन, ये डिमांड कर रहे हैं कि फेयर शेयर कंट्रीब्यूशन ऑफ OTT सर्विस प्रोवाइडर्स टू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क ऑपरेटर्स. मतलब इनको जितना खर्चा लगता है तारे बिछाने में या नेटवर्क देने में, उतना इक्वली वो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी पैसा दें.
बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स और डेटा यूसेज। व्हाट्सएप में इतने सब्सक्राइबर्स हैं, पैसा वो एक भी रुपये नहीं लगाता है एयरटेल के लिए। तो यही बोला गया है कि जितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं या जितना डेटा यूसेज हो रहा है या जितने सब्सक्राइबर्स हैं उस हिसाब से वो पैसा दें। फंड्स रिसीव विल एनहांस द कंट्रीब्यूशन टू एक्सचेकर, हमारे एक्सचेकर के मनी में वो पैसा जाएगा, हमारा टैक्स में अच्छा पैसा आएगा। OTT सर्विसेज शुड बी गवर्नड बाय द सेम सेट ऑफ रूल्स, सेम सेट ऑफ रूल्स जो एयरटेल वोडाफोन वगैरह को लगते हैं वही इनको भी लगने चाहिए। तो ये बोला गया है। आगे पढ़ते हैं। OTT services are regulated under existing IT Act 2000, Consumer Protection Act 2019 and other acts and rules. So this is all what is given in this news. Now this is an important news. Committed to helping artisans, says Prime Minister, and unveils a 13,000 crore scheme. Let's see what is there in the news. PM Vishwakarma Yojana, PMVY. It is to uplift the artisans and craftspeople. It is first state of the art India International Convention and Expo Center named Yashobhumi was inaugurated at Dwarka, New Delhi, dedicated to every Vishwakarma of the nation. Vishwakarma कौन होते हैं? All the traders, craftsmen, all the skill workers. तो हमारा फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सपो सेंटर है जिस यशोभूमि है वो इनॉग्रेट हुआ है द्वारका में, न्यू दिल्ली में, और वो डेडिकेट किया गया है सारे विश्वकर्मा ऑफ द कंट्री। अब क्या बेनिफिट्स हैं इनको? कोलेट्रल फ्री एंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन ऑफ अबाउट 1 लाख टू बी रीपेड इन 18 मंथ्स एंड 2 लाख का लोन दिया जाएगा जो ये 30 महीने में रीपे कर सकते हैं। गवर्नमेंट का विजन है वोकल फॉर लोकल। सो दिस इज ऑल व्हाट इज गिवन इन दिस न्यूज़। एक बहुत अच्छी न्यूज़ है दैट शांति निकेतन फाइंड्स इट्स प्लेस ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। क्या दिया गया है? लेट्स सी। इट इज़ अ टाउन। नाउ शांति निकेतन इज़ अ टाउन established by Nobel laureate Rabindranath Tagore. It is located in Birbhum district of West Bengal. शांति निकेतन का मतलब है abode of peace. abode मतलब home, home of peace, शांति का घर. It was established in 1901. ये probable question हो सकता है SSC या कोई भी और एग्जाम्स में कि it was established in 1901. Originally named as ब्रह्मचार्य आश्रम. यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर laid the foundation of विश्व भारती यूनिवर्सिटी. This news has come on the world page about the military leaders of Mali, Niger and Burkina Faso who have signed a mutual defense pact. Let's see what is there in the news. Military leaders of Mali, Niger, Burkina Faso have signed a mutual defense deal. It is assumed to have a fight against terrorism. Now, jihadist insurgency erupt हुई थी माली में 2012 में और वो नाइजर में भी स्प्रेड हुई थी और बुर्किना फासो में भी स्प्रेड हुई थी। रिमेंबर एक क्वेश्चन आया था शायद बुर्किना फासो का या माली का, ये कहाँ पे है लोकेटिंग on the world map. This is one of news which do have chances of coming in the newspaper. Just see their locations in the world map. आज की सबसे important news in the newspaper is on the science page. ये science page पे है. Cats are hunting down India's birds. Are we paying the attention? अब इस न्यूज़ में क्या है वो पढ़ते हैं। स्टेट ऑफ इंडियन बर्ड्स 2023 एक्सरसाइज कंक्लूड हुई थी। उसके हिसाब से जो एक साइलेंट बर्ड किलर है कैट, it is lurking in India's urban areas. In US alone, free-ranging cats have contributed to the extinction of dozens of bird species recorded in the IUCN list. तो जो cats हैं, जो domestic cats हैं, वो काफ़ी birds को extinct कर रहे हैं उनको खा के। Cat saliva जो है, ये important part है कि जो cat saliva है, it contains bacteria which is lethal to birds. Now, if the direct impact doesn't kill the bird, the bacteria kills the bird. तो जब तक bird को hospital लेके जाते हैं, अगर वो जिंदा भी होती है ना, तो जो अगर बैक्टीरिया उसकी बॉडी में जा चुका होता है तो वो उसको मार देता है। डोमेस्टिक कैट्स को बोला जाता है फेलिस कैटस। Wild cats were first to be domesticated in West Asia 10,000 years ago. Today, they are the world's 100 worst invasive alien species. That is, invasive मतलब fast spreading and alien मतलब which have come from another country. अब एक पॉलिसी है जिसको TNR पॉलिसी बोलते हैं, ट्रैप न्यूटर पॉलिसी। अब ये जो पॉलिसी है हालांकि लेस सक्सेसफुल है, पर ये क्या है? इस पॉलिसी में स्ट्रे कैट्स और डॉग्स आर ट्रैप्ड, स्टरलाइज्ड एंड रिटर्न्ड इन होप दैट दिस विल रिड्यूस देयर पॉपुलेशन। उनको ट्रैप किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है और वापस से छोड़ दिया जाता है, ये सोच के कि उनकी पॉपुलेशन कम होगी। बट इट कुड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ कैट्स लाइफ ऑल्सो। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कैट्स आर नॉट ईजी टू ट्रैप। पहली चीज़ तो उनको ट्रैप करना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर उनको ट्रैप भी करते हैं तो जब तक सबको स्टरलाइज नहीं कर देते हम सारी कैट्स को एट वंस, उनका पॉपुलेशन में डिक्रीज नहीं हो रहा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन द न्यूज़ ऑफ cats hunting down India's birds. Let's study the news of the first page. New Parliament to host session from tomorrow. New Parliament, second day of the special session will be held in New Parliament, that is on September 19. New Parliament में
जो स्पेशल सेशन है उसका सेकेंड डे हेल्ड होगा। और वहीं इसी पेज पे एक और न्यूज़ है, सेंटर प्लान्स टू रिकॉल RAF फ्रॉम मणिपुर। रिकॉलिंग RAF क्या है? रैपिड एक्शन फोर्स। ओके, तो सेंटर प्लान कर रही है कि जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसको वापस बुला लिया जाए। यूनियन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग अ फेज्ड विड्रॉल ऑफ द रैपिड एक्शन फोर्स फ्रॉम मणिपुर। एट प्रेजेंट 10 companies of rapid action force are deployed in Manipur. One point to be noted or to be seen is what is rapid action force. Now they are the specially trained wing of CRPF. They are not as same as CRPF, but they are amongst the CRPF, but they are specially trained wing. Now specially trained for what? To deal with riots, to deal with crowd control and rescue and relief operations. They were formed in 1992. The headquarters are in New Delhi, and their motto is serving humanity with sensitive policing. Okay, this is very important because they have to be very sensitive during riots and crowd control. एक सिंगल RAF बटालियन में 1000 पर्सनल होते हैं, उनके पास गैजेट्स होते हैं और नॉन लीथल वेपन्स होते हैं लाइक स्मोक, टीयर स्मोक या ग्रेनेड लॉन्चर्स एक्सेट्रा. सो दिस इज ऑल अबाउट रैपिड एक्शन फोर्स. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज़ ऑफ 18 September with my notes. I hope you have understood them because they were in the crisp format, and if you want me to post these notes daily, either DM me or like this or subscribe my channel. Thank you so much.